तो ये मैंने पॉज कर दिया। ठीक। Hello everyone. Today I'm going to discuss with you structure in C programming. As we all know, array is a collection of similar data types, but structure is different because we cannot store multiple data types in array. That's why structure was evolved, and a structure is a collection of variables of different types under a single name. You can also say heterogeneous data types collection because you can put integer, character, float, everything under a single name, and that name could be given to a structure. Okay, so let's see how we can define structures. For structure definition, this is a syntax. You need to write struct keyword. If you want to define any structure, the first thing you need to write is struct keyword. उसके बाद आप structure का name दे सकते हैं according to the variable naming rules, and inside the curly braces of structure, you have to mention the data type and the members of structure. You can give as many as members you want in the structure, but you have to specify the data type and the member name. Okay, आपको पहले data type mention करना होगा और फिर member name. Like I have given the example, this is structure syntax. Data type member name 1, data type member name 2, and you can include as many as data members with different data types inside the structure, and this structure will end with the semicolon. Do remember, आपको याद रखना है कि structure जो है semicolon से end होगा. For example, if I'm taking one example, structure employee, I've given the name of the structure as employee. So struct employee, struct is the keyword used to create structure, then employee. And inside the curly braces, I have taken three variables, three members actually. Character, name, first member is name, पहला member name है with a size of 50. दूसरा member age है, integer type का है. तीसरा member float है, salary, integer type का age, float type का salary. So I have taken three different data types of each and every member inside the structure, and then terminated the structure with a semicolon. Okay, this is how we can define a structure. After defining a structure, we need to create variables. सबसे पहले हमें define करना होगा, फिर हम variables create करेंगे. If you want to use a structure, variable creation is necessary. So in this case, see, we can do it in two ways. दो methods से हम कर सकते हैं creation of variables in structure. The first method is this way. हमने structure बना लिया, employee, struct employee, character name 50, int age, float salary, and semicolon. Wherever I want to use that structure, मैं वहाँ structure के variables बना सकती हूँ. For example, int main, struct employee. While creating structure variable, do remember first you have to write struct employee, that means struct keyword and the structure name, and then the variables. I have created two variables here. You can also create array of structure. Okay, structure variables आप array भी create कर सकते हो, and then closing of name. This is one way we can do structure creation of variable of structure, any structure, and other way is you can create the variable then and there with the structure. For example, struct employee, character name 50, int age, float salary, closing brace. As soon as you put in closing brace, after that you can create variables of structure. आप create कर सकते variable of structure. emp1 and emp2 I've created, and then semicolon will be mentioned after creation of structure variables. These are two ways you can create variables of structure. The third thing we need to discuss after this is accessing members. These are the members of structure, or character, age, salary. These all are members of structure. Now we need to know, while working on structure, we have to access each and every member. हर एक member को हमें access करना है. हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं. कैसे एक्सेस करेंगे मेंबर्स को?
we have two operators. One is dot operator. This is called member operator. The other one is arrow operator. This is called structure pointer operator. This will be used later. We will discuss this member operator right now, and I'll discuss this later because this operator, arrow operator, will be used with respect to pointers, not now. Okay. For example, I'm taking one example of structure. After understanding defining of structure, creating variables, and accessing the members, I'm taking one example to create structure and access the variables of those structure. That structure. Struct employee. I've created one structure. Struct keyword. Employee is the structure name. Then character name. Size is 50. Name is one member, and the salary is another member of integer type. First one is of character type. Second one is of integer type. Then semicolon. I've started the main function. Struct employee. EMP. I've created the variable of structure here, one variable EMP1. Printf statement, enter name, scanf statement, %s EMP dot name. Here I am accessing the structure member name. Okay. %s why? Because we are accessing strings. Then printf enter salary, %d format specifier for integer, and address of emp.salary. This is how we can access emp.salary value member of structure. Address will be passed, and then after getting these two values, later on I printed both the values. Employee name is %s emp.name and salary is %d emp.salary. This is how you can access the variables of, members of structure, or variables of members of structure through variables. I'm using the dot operator. Later on, I'm going to discuss with you the nested structure, how we can do the nested structure, as well as the difference between structure and union data type. Structure is a user-defined data type. Do remember this. Structure is not a derived or inbuilt data type. It's a user-defined data type. Okay, because you are creating it. Name is given by you. You have to mention each and every member inside this, and then only you can go for using the structure in your programs. Continuing further, I'm going to discuss the keyword typedef with you. How to use the keyword typedef in the structure. It is used to create an alias name. It will be more easier for you to declare variable of structure with alias name. It will work as the built-in data type now. For example, यहाँ देख सकते हैं हम struct employee, character, name, int salary, two elements are there, and then here we are creating the variables of structure. Variable structure की variable create करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है struct keyword, then structure name, then the variables. Okay. But if you're going to use typedef keyword, अगर आप typedef keyword use करोगे, you will defining the type of structure basically. Typedef struct employee. Once you will define the type of struct, it will be more easier for you to create the variables of structure. Typedef struct employee, char name 50, size is 50, in salary, and closing brace. After closing brace, I have mentioned one name. This is the alias name for structure. Then semicolon. Void main. Now you can see, rather than using this big statement with the struct keyword, I am going to use just alias name of structure to create the variables E1 and E2. EMP, it's very simple. EMP, E1 and E2. You can create as many as variable you want with alias name. It will be more easier for you. Now, we are going to discuss nested structures.
That means structure within a structure. If you want to define a structure within a structure, for example, अगर आप एक employee का structure ले रहे हो and you're discussing the address element inside us, address have many parts. Maybe the locality, city, state, pin code. It could be could have many number of things within this. So nested structure is very beneficial in such cases. For example, struct address, we have created one structure address. यहाँ पे एक address structure create किया है जिसमें 3 elements है, character city, size 20, int pen and the phone number, character phone number. You can add others element too. I have added 3 only. आप ज़्यादा elements भी add कर सकते हो and the structure is closed here by terminating it with semicolon. Then I have created one more structure, struct employee. This is the original structure and this is the nested one. ये nested structure है and this is the outer structure जिसमें हमने इस structure को nest किया है. Character name 20 size का name लिया है. Struct address. See, struct address is a structure, nested structure, and the element name is add. Okay, so we have created one element of this structure type inside this. This will be nested structure. Otherwise, there is one more option. अगर आप nest करना चाहते हो, you can put this definition inside employee structure. This will also work in same manner. जैसे आप अभी काम करेगा वैसे ही आपका ये nested structure अगर आप यहाँ डाल दोगे, it will work as in the same manner. Now I'm closing the structure and the semicolon. Inside main देखें how किस तरह से हमने use किया है struct employee emp. See, we have created one variable of employee structure with name emp. Enter employee info. Okay, printf statement लिया है हमने, enter employee info and the scanf statement. कौन सी information we have used for format specifier. First for the name, second for the city, third for the pin and fourth for phone number. Okay, phone number has been mentioned in character format. Okay, it's because it's not a digit. To access this structure inside a structure, there will be different method. For example, अगर आप इस structure के element को access कर रहे हो, आप directly वैसे ही dot operator के साथ access कर सकते हो. emp is a variable name dot the structure element name. Okay. अगर आपको इस nested structure के elements को access करना है तो आपको double dot operator से access करना पड़ेगा. For example, emp जो हमने variable name outer structure का create किया है, then dot operator add, this is the element name of this structure type, and then dot operator city. Okay, then इसी तरह हम pin को access करेंगे double dot operator से and phone number को access करेंगे and इस तरह से फिर फाइनली हम प्रिंट कर सकते हैं. एम्प्लॉय इन्फो इज यूजिंग द सेम फॉर्मेट स्पेसिफायर %s एंड %s इन द सेम मैनर जैसे हमने यहाँ पे एड्रेस पास किया था टू गेट द डेटा. यहाँ पे हम प्रिंटिंग करवा रहे हैं. सो emp.add.city for accessing city, emp.add.pin to access pin and emp.add.phone number to access phone. But for accessing name, it will be as simple as that, emp.name. Okay. So this is how the nested structure works. Let's now discuss the pointer to structure. We can also create pointers to structure. जैसे हम normal variables create करते हैं structure के, आप pointer भी create कर सकते हैं. It will be created in same manner जैसे हम normal basic data types के pointer declare करते हैं, वैसे ही आपको स्ट्रक्चर के पॉइंटर्स डिक्लेयर करने हैं. फॉर एग्जांपल इंटीजर का पॉइंटर आप डिक्लेयर करते हो या फ्लोट का पॉइंटर आप डिक्लेयर करते हो या कैरेक्टर का पॉइंटर आप डिक्लेयर करते हो. तीनों ही केसेस में फर्स्ट यू डिक्लेयर पॉइंटर एंड देन असाइन द एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल ऑफ सेम टाइप टू दैट पॉइंटर. ओनली देन यू कैन एक्सेस दैट वेरिएबल थ्रू दैट पॉइंटर. ओके, इन सेम मैनर स्ट्रक्चर पॉइंटर विल बी क्रिएटेड. सो ऑपरेटर जो हम यूज करेंगे फॉर एक्सेसिंग थ्रू स्ट्रक्चर, अगर हमें स्ट्रक्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो उसके लिए ऑपरेटर जब हम पॉइंटर यूज कर रहे हैं, पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं, पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज एरो ऑपरेटर. एज आई टोल्ड यू बिफोर, हम एरो ऑपरेटर का यूज करेंगे.
फॉर एग्जाम्पल आई टेकन वन एग्जाम्पल है struct person, एक person नेम से struct बनाया मैंने यहाँ पर, जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक एज इंटीजर टाइप का और दूसरा फ्लोट वेट टाइप का. Inside main I have created one pointer person ptr. Struct person pointer should be of same type. As you know, I told you इंटीजर वेरिएबल को एड्रेस को स्टोर करने के लिए इंटीजर पॉइंटर, कैरेक्टर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए कैरेक्टर पॉइंटर, फ्लोट वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए फ्लोट पॉइंटर. तो सेम स्ट्रक्चर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए उसी स्ट्रक्चर के टाइप का पॉइंटर होना चाहिए. स्ट्रक्ट पर्सन स्टार पर्सन ptr एंड आई हैव क्रिएटेड वन वेरिएबल आल्सो पर्सन 1. सो इस पर्सन 1 वेरिएबल का एड्रेस जो है हमने पर्सन ptr में ट्रांसफर कर दिया, विच इज द पॉइंटर ऑफ सेम स्ट्रक्चर टाइप. ओके, and enter age, address, enter age, scanf statement, person d format specified, address of person ptr, arrow operator age, because we are accessing the age through ptr, person ptr pointer से हम age को access कर रहे हैं इस structure के pointer से. that means हम arrow operator का use करेंगे. dot operator कब use करते हैं? जब हम normal variable से किसी element को access कर रहे हैं. अभी यहाँ पॉइंटर से एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं. एंड वेट, देन पर्सन डेफ, पर्सन एड्रेस ऑफ पर्सन ptr, एरो ऑपरेटर वेट. ओके, दोनों इनपुट ले लिया हमने स्कैनफ स्टेटमेंट में. आफ्टर टेकिंग इनपुट वी आर प्रिंटिंग एज इज इक्वल्स टू पर्सन d स्लैश n पर्सन ptr एरो ऑपरेटर एज and weight is equals to person f person ptr arrow operator weight. This is how we can use pointer to structure and access the elements of structure using pointer through arrow operator. Till now we were discussing about structure. Structure is a user defined data type, as I told you. There is another user defined data type in C language which is called union. But union is different from structure. Let's see how it is different from structure and how we can create union data type and how to create the variables of it and how to access those variables and what is the main thing which is different from structure in union. To identify that, we have to understand first union. Union is a user-defined data type similar to structure in C language. It's similar to structure, this is true. But the very important thing you need to know is it is a special data type that allows different data types in the same memory location. ये एक special data type है जो different data types को एक ही memory location में अलाउ करता है. दैट मीन्स द मेमोरी लोकेशन विल बी वन ओनली. वहीं पर आपके डिफरेंट डेटा टाइप्स, डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप स्टोर होंगे. लेट्स सी, टू मेक द स्टेटमेंट मोर अंडरस्टैंडेबल वी हैव टू अंडरस्टैंड यूनियन. हाउ टू डिफाइन द यूनियन? सी, यूनियन को डिफाइन करने के लिए सेम मैनर में जैसे हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया था वैसे ही डिफाइन करेंगे. यूनियन इज अ कीवर्ड, यूनियन हम यूज करेंगे, कीवर्ड यूज करेंगे. देन उसके साथ हम यूनियन का नेम, कार. सपोज मैंने यूनियन कार क्रिएट किया है. इट हैज 2 एलिमेंट्स. जैसे एलिमेंट स्ट्रक्चर के क्रिएट करते हैं वैसे ही यूनियन के क्रिएट करेंगे. कार नेम साइज इज 50. देन int price, another element is price, then closing brace and the semicolon. It's in the same manner. The difference is only the keyword. Then how to create variables of union. Union के variables को create करने के लिए let's see, union car हमने create किया है. Inside this we have created 2 elements, name and price. Name is of character type, size 50, and price is of integer type. Then closing brace, semicolon. Inside main, let's see how we can create variables of union. Union keyword, then the union name, and then the variable name. car1, car2, these are normal variables, and this is the pointer to union. आप pointer variables भी create कर सकते हैं like in the structure. आप similar manner में union के भी pointer variables create कर सकते हैं. Or you can also create variable then and there where you are declaring your structure. आप same type पर
आज जब आप स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हो उसी टाइम पर अपने यूनियन को डिफाइन कर रहे हो उसी टाइम पर आप यूनियन के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे हम स्ट्रक्चर में करते थे car1, car2 and the pointer variable. Okay, how can we can access the members of union? Same manner जैसे हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते थे, नॉर्मल आपके नॉर्मल वेरिएबल से आप एक्सेस करना चाहते हो तो डॉट ऑपरेटर, एंड पॉइंटर से आप एक्सेस करना चाहते हो तो पॉइंटर के लिए एरो ऑपरेटर. Let's see how your union is different from structure. This is very important point and generally asked in the examination, as well as a very important question from the point of view of interviews, that how the structure is different from union. See, structure और union आपको पता है दोनों ही user defined data type है, but the different quality of union is कि वो एक ही ब्लॉक एलोकेट करता है फॉर द कंप्लीट यूनियन वेरिएबल. सी, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय हमने क्रिएट किया है. इनसाइड दिस वी हैव 3 एलिमेंट्स, char x, ओके, int y एंड float z. इसका हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है e1. सो द साइज ऑफ e1, दिस वेरिएबल साइज वुड बी 7 बाइट्स. कैसे 7 बाइट्स? x के लिए 1 बाइट क्योंकि x कैरेक्टर है, 2 bytes for integer, y integer है, and z is float value. So float के लिए 4 bytes, 4 plus 2 6 plus 1. That means 7 bytes की memory आपका structure allocate करेगा. And to remember, all the 3 elements will be stored on different blocks, in different blocks. किसी के लिए भी combined block नहीं है, अलग अलग blocks है. So this is structure variable, how the structure variable will be stored. Then if we discuss about union, how union variable will be stored. Suppose union employee we have created in the same manner. Character x, first element है हमारा character x, second element integer y and third element float z. अगर हम union का e1 variable create करते हैं, do remember e1 का size क्या होगा? E1 का साइज होगा द मैक्सिमम साइज ऑफ एलिमेंट. ओके, मैक्सिमम साइज एलिमेंट का साइज ये चेक करेगा. इसका साइज, कैरेक्टर का साइज 1 बाइट है, इंटीजर का साइज 2 बाइट है, फ्लोट का साइज 4 बाइट्स है. सो दिस इज द मैक्सिमम साइज वेरिएबल. वो उस मैक्सिमम साइज वेरिएबल का साइज फाइंड आउट करेगा और उसके अकॉर्डिंग अपने वेरिएबल e1 को मेमोरी एलोकेट करेगा. दैट मीन्स ऑफ 4 बाइट. तो 4 बाइट की मेमोरी मिलेगी आपके यूनियन वेरिएबल को. तो अगर आपको कैरेक्टर स्टोर करना है तो इसी 4 बाइट के ब्लॉक में स्टोर होगा, एक सिंगल ब्लॉक मिलेगा, 4 बाइट के ब्लॉक में स्टोर होगा. इंटीजर स्टोर करना है तो भी यही होगा, और आपका जो फ्लोट है वो स्टोर करना है तो भी यही होगा. सो आप एक एट अ टाइम ओनली 1 एलिमेंट ही स्टोर कर सकते हैं. अगर आपने ओवरराइट कर दिया तो पुराना वाला एलिमेंट आपका वॉश आउट हो जाएगा एंड न्यू एलिमेंट जो आपने लेटेस्ट एलिमेंट जो रजिस्ट करना है वो डाला है वो आपको विजिबल रहेगा. फॉर एग्जांपल यूनियन टेस्ट हमने बनाया है, ए बी सी 3 वेरिएबल्स दिए हैं, ए इज ऑफ इंटीजर, बी इज ऑफ फ्लोट एंड सी इज ऑफ कैरेक्टर. इन सेमीकोलन वी हैव डिफाइंड द यूनियन एंड इनसाइड मेन यूनियन टेस्ट नाम से एक T1 नाम से एक वेरिएबल बनाया यूनियन टेस्ट का. T1 से हम A को एक्सेस कर रहे हैं, 12 वैल्यू इसमें एलोकेट की. T1 से हम B को एक्सेस कर रहे हैं, 20.2 वैल्यू इसमें एलोकेट की. T1 से हम C को एक्सेस कर रहे हैं और Z वैल्यू इसमें एलोकेट की. डू रिमेंबर जब आप प्रिंट करेंगे आपकी फर्स्ट 2 वैल्यूज गार्बेज वैल्यूज में विजिबल होंगी क्योंकि आपने लेटेस्ट जो स्टोर किया है वो Z. आपकी ये वैल्यूज जो है वो गार्बेज में कन्वर्ट हो जाएंगी या फिर अमेंड हो जाएंगी. द लेटेस्ट वैल्यू जो z है वो ही करेक्टली विजिबल होगी इफ यू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ऑल द 3 elements. Do remember this. Okay, so this is the difference between union and structure. Now it is your task to complete the difference between structure and union. You have to find out the differences between structure and union. Find out differences as many as you can. Make a table, find out the differences, and be ready for answering this question. Thank you.